Hello everyone and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. So today in this lecture we will going to study about one of the broad category of forensic sciences, that is explosives and arson, boom and flame. So basically this topic is related to forensic sciences. So let us understand how this topic is related to forensic sciences and what is forensic explosives and arson means. So in this topic we will going to cover the arson part first, and then we will going to cover the explosive part. So let us understand what is arson. So here it is written motives for arson. So what are the motives for arson? But before understanding what is the motive for arson, let us understand the definition part of arson. So if we talk about the definition of arson, so basically if students, arson means when a person who is going to commit the crime, या आप कह सकते हो एक ऐसा पर्सन जिसकी इंटेंशन हो, विलिंगनेस हो किसी भी प्रॉपर्टी को बर्न करने की, स्पेशली जब उसके विद द माइंडसेट ऑफ क्रिमिनल और फ्रॉडुलेंट इंटेंट, उसको कहते हैं arson. So arson is something that is basically a crime of setting fire to a building on a purpose. Okay, so I'm just writing the definition here. The crime of setting fire to a building. Okay, so here building could be anything, or one of the most important keyword is on purpose. Okay, so building could be anything. It could be a house, it could be any factory, it could be any शॉपिंग मॉल, कुछ भी हो सकता है. तो जहाँ पर एक क्राइम कंडक्ट होता है, कैसे, फायर लगा करके, और उसका एक पर्पस होता है कि उसके माइंड सेट क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करना है, एक फ्रॉडुलेंट इंटेंट होता है, उसको कहते हैं arson. So arson is nothing but it is a crime of setting fire to a building on a purpose. Which type of purpose? Criminal or fraudulent intent. Okay, so this is actually arson means. Now let us understand what are the motives of arson. So the first motive of arson is crime concealment. Second is revenge or spite, monetary gain, malicious vandalism. So these all are the motives जहाँ पर arson is committed. Okay, so this is how arson occur. As you can see in this picture, a person with a purpose, इस person के पास purpose होगा इस building को fire करने, set to fire. Similarly, as you can see the second picture, so these two pictures are related to arson, how arson occurs. Okay, so arson is a crime activity that is performed, that has performed by a person who has a criminal mindset, or you can say fraudulent mindset. Okay, now let us understand arson in detail and let's see the introduction part. So अगर हम introduction part देखें तो arson या explosion जो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, ये एक कॉम्प्लेक्स और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस है टू इन्वेस्टिगेट. क्यों? वाई? बिकॉज द प्रिडेटर्स हैज टिपिकली thoroughly planned the act. अब who is the predator here students? The predator is a person जिसने फायर सेट किया है, जिसके पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्रिमिनल माइंडसेट है, और उसने किसी भी बिल्डिंग को फायर लगाया है. सो ये arson और एक्सप्लोसिव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हो जाता है टू इन्वेस्टिगेट. वाई? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. एज यू कैन से, द फर्स्ट रीजन इज, आई एम जस्ट मार्किंग इट हियर. Okay, so the first reason is
The predator has typically thoroughly planned the act. Second, the predator is not present during the act, and the last one is destructive is so extensive. See, पहले तो जब किसी भी बिल्डिंग पे फायर सेट किया जाता है, आग लगती है, तो ऑब्वियसली जो पर्सन है ही हिमसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट देयर, तो एविडेंस कलेक्ट करना इज़ वेरी चैलेंजिंग. सेकेंड, किसी भी बिल्डिंग को फायर सेट करने के लिए एक ह्यूज प्लानिंग की ज़रूरत होती है. ओके, सो जब प्लानिंग किसी चीज़ की करी जाती है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि एविडेंसेस प्रेजेंट होंगे. और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. क्यों? एवरीथिंग इज सेट टू फायर. अब थ्रू फायर यू कैन नॉट कलेक्ट द एविडेंसेस. There are certain evidences but not the whole thing that you can collect. Okay. Second, predator, वही the person, वो present नहीं होता है during the act. Okay. और destruction is so extensive, और जितना destruction हुआ है वो काफ़ी high level पे हुआ है. So these all three are बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट इसको इन्वेस्टिगेट करना एक चैलेंज है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द डेफिनेशन पार्ट. सो ऑलरेडी हम लोगों ने एरिसन की डेफिनेशन समझ ली है कि एक अनकंट्रोलेबल बर्निंग है और इसमें रियल प्रॉपर्टीज़ को सेट टू फायर किया जाता है और विद अ अनलॉफुल इंटेंट. Okay, so this is the arson. So arson is something that is very unlawful, that is something that is an act of willful or deliberately setting fire to or to a certain property. Although जो एक्ट होता है एरिसन का ये टिपिकली इन्वॉल्व करता है बिल्डिंग्स को, एंड ये जो टर्म है एरिसन, इट इज़ very closely related to the intentional burning of other things such as motor vehicle, even the watercraft or forest. So it is nothing ki property ही fire, it is set to fires. Okay, there are other things also. Okay, so what are the other things? I'm just writing it here, you can note it down somewhere. So the first one is building. Okay, you can note it down somewhere. Second is forest. Third is your motor vehicle. Okay, anything. एरिसन में सारी वो चीज़ जो आप फायर सेट कर सकते हो, जिस पे आप आग लगा सकते हो, दैट कम्स अंडर एरिसन. और ये एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ विलफुल और डेलिबरेटरी सेटिंग फायर टू अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. So the analysis of fire related incident is called fire investigation. So how it is related to forensic sciences? जब fire related incidents होते हैं तो उनको कहते हैं fire investigations. Okay, so इसकी investigation बहुत ही complex होती है, काफ़ी challenging होती है to collect the evidences. Okay. Now let us understand the elements of arson. So according to the common law, there are certain elements that are required to determine a fire to be caused by arson. So these elements of arson include the malicious burning of a dwelling belonging to another. While common law has its roots in the birth of the nation, legislation has changed through years, expanding the definition of arson to include the burning of person-owned property as well as burning the personal property including vehicle and land, जो अभी हम लोगों ने समझा. So अगर हम elements की बात करें,
Okay, so the first is malicious. So what is malicious? Malicious का मतलब होता है showing a desire to cause harm to something. जहाँ पर एक desire होती है particular person की कि वो कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा सकता है, उसको कहते हैं malicious. सो एलिमेंट्स ऑफ एरेसन में क्या क्या आ गया? मैलिशियस जब एक पर्सन की बिल्कुल इंटेंशन होती है, जिसकी एक विल होती है, डिज़ायर होती है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे हार्म कर सके, कैसे उसको बर्न कर सके. ठीक है, सो दीज ऑल कम्स अंडर द एलिमेंट ऑफ एरेसन. ओके, बिकॉज जब तक कि पर्सन की इंटेंशन नहीं होगी, जब तक कि वो कोई भी क्राइम कंडक्ट नहीं कर सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैलिशियस, अ पर्सन हैज़ अ मैलिशियस थिंकिंग, जिसके पास इंटेंशंस होते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को बर्न करने के लिए. सेकेंड है, सॉरी, योर थर्ड पॉइंट इज ऑफ ड्वेलिंग. ड्वेलिंग मीन्स अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स. ड्वेलिंग, okay, like for example house, for example flats, for example your any property where a person is living, sometimes the offices also. Okay, and belongings to other. Okay, not a belonging to a particular person, but belonging to others. So these all comes under the elements of arson. So arson के important elements हैं malicious, burning, of dwelling, belonging to others. ओके, सो पहले अगर हम पहले की डेफिनेशंस की बात करें तो एरसन इज जस्ट related to only the property that is owned by someone, but now it is related, it is expanded, and now the definition says that burning of any property, burning of any vehicle, burning of any land, even the forest also, it comes under arson. Okay, so these are the elements of arson. As you can see, there is a lighter who जो एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर बिल्डिंग में फायर लग चुकी है. एंड देर आर इन द सेकेंड इमेज, एज यू कैन सी, देर आर पर्सन्स हु आर स्टॉपिंग दिस फायर. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फायर. अब हम समझते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री ऑफ फायर. Okay, so the fire tetrahedron. Okay, what can we do if we need to stop the fire? Generally, basically एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, या पूछा ही जाता है कि what can we do if we want to stop the fire? So the first step you can throw water on that fire. पानी से आप आग बुझा सकते हो. यू कैन कॉल द फायर स्टेशन फॉर फॉर द मोर वाटर थिंग्स. सो वाटर से आप फायर को बुझा सकते हो. सो इफ यू सी द केमिस्ट्री ऑफ द फायर, सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम, there is a heat, there is a fuel, and there is a oxygen, and in between there is a chemical chain reaction. So now let us understand how it is done. Okay, so if you see students, okay, so if you see that chemically fire is a type of a oxidation, which is the combination of oxygen and other substances to produce a new substances. अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करो, सो केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर सेज कि ये एक ऑक्सीडेशन टाइप की एक रिएक्शन होती है. ऑक्सीडेशन मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद अ सब्सटेंस, and after combining with a substance like this, it produces a new substances. Okay, so oxidation reaction typically result in a large energy release, mainly heat or light. As you can see in this particular definition, or sorry, reaction, there is a compound, or you can say there is a substance with which oxygen is combining, and after the combination of oxygen, okay, it is giving a new compound. Okay,
with the more energy. Energy is here, it's liberated more. So because energy is liberated in the form of heat and light, so that is the chemistry of fire. Okay, so that is also known as the oxidation reaction. Now let's move further and let's see the this what we have discussed in this triangle form. So this triangle is basically known as the fire tetrahedron. So let us understand this tetrahedron in detail. So the fire, इसको कहा जाता है fire triangle or tetrahedron. So there is a fuel, oxygen is sufficient quantity, और ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करती है विथ फ्यूल. Okay, so sufficient heat to initiate the combination and sustain the reaction. So oxygen have a sufficient quantity जिसके वजह से ये फ्यूल के साथ कंबाइन करती है. जैसे ये फ्यूल के साथ कंबाइन करती है तो ये रिलीज करती है sufficient amount of energy in the form of heat, और ये काफ़ी हद तक की हेल्प्स इन दी कंबशन, इनिशिएट करती है कंबशन को, और ये सस्टेन करती है द रिएक्शन को. ओके, सो द ऑटो ignition temperature of a fuel is the minimum temperature needed to spontaneously ignite it without a spark or a flame. So this is again very important, means as you can see this, the auto ignition temperature. So what is the auto ignition temperature students? So auto ignition temperature एक minimum temperature होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नीडेड होता है कि वो स्पॉन्टेनियसली एकदम से इग्नाइट कर दे रिएक्शन को विदाउट अ स्पार्क और अ फ्लेम. So if there are certain things, that's a white phosphorus को it need a temperature of 4 degrees centigrade, gasoline needs -28 degrees centigrade, hydrogen needs 550 degrees centigrade. So all these have a different criterias of the auto ignition temperature, means the white phosphorus have different criteria, gasoline have different criterias of temperature, hydrogen have different range of temperature. Okay, so every have a different criteria of temperature. So basically in examination they can ask you this question, that what do you understand by auto ignition temperature. So this is very important and this can comes in the MCQs. Okay, so they can ask you the temperature of white phosphorus, they can ask you at how what is the auto ignition temperature of gasoline, what is the auto ignition temperature of hydrogen. So this is again an important point to understand. Okay, so now let us understand the further the additional factors beside the liberation of energy needed to explain the fire is the rate or speed at which the oxidation reaction take place. So first thing, किसी भी फायर को सेट करने के लिए इग्निशन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक फायर को सेट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर देयर आर एडिशनल फैक्टर्स ऑल्सो, कि कितनी तेज़ी से यू कैन से एट विच रेट या एट विच स्पीड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब किस रेट ऑफ स्पीड से एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हो रही है, दैट इज अनदर फैक्टर. देन द फ्यूल विल अचीव द रिएक्शन रेट विद ऑक्सीजन sufficient to produce the flame only when it is in the gaseous state. So here the liquid जो liquid है when it burns with the temperature is high enough to vaporize it, it is a flash point. Okay, so in examination they can ask you about what do you understand by flash point. So flash point is again very important to understand students. So what do you understand by the flash point? So flash point वो point होता है जहाँ पर liquid
बर्न होता है जब टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, मीन्स इतना हाई होता है कि वो वेपराइज हो जाए, तो इसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैश पॉइंट? अ लिक्विड बर्न्स व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. ओके, कोई भी लिक्विड कब बर्न होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो. ठीक है, ये हम डेली टू डेली लाइफ घर पे भी एक्सपीरियंस करते हैं वाइल कुकिंग द फूड. सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है तो लिक्विड बर्न होता है. बट अगर टेम्परेचर इतना हाई हो कि वो इनफ हो कि वो लिक्विड वेपराइज्ड हो जाए, तो उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट. सेकेंड है पायरोलिसिस. पायरोलिसिस हम लोगों ने सबने अपने ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पायरोलिसिस? सो अ सॉलिड मस्ट बी हॉट इनफ टू डिकम्पोज इनटू गैसियस प्रोडक्ट. मतलब जब कोई भी सॉलिड उसके अंदर इतनी ज़्यादा यू कैन से वो सॉलिड इतना ज़्यादा हॉट हो, इतना ज़्यादा उसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी हो या हीटेड हो कि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए एक गैसियस प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं पायरोलिसिस. So these two things could be very important from the examination point of view. That is, what do you understand by flashpoint and what is pyrolysis? So I'm just writing the question. You can note it down somewhere. In examination, they might ask you, what do you understand by flashpoint? What is flash point? Second is, what is pyrolysis? Okay, so these two are very important. You can have a full view on this pyrolysis and flash point. Now comes the glowing combustion, or you can say smoldering, is the burning at the fuel air interference like cigarette empresses, charcoal. There comes a term that is spontaneous combustion. So spontaneous means अचानक से, immediately. Okay, साथ ही साथ you can say. So spontaneous means which is a very rare, or it result from the natural heat producing processes in poorly ventilated containers or the areas. Okay, so the experiences show that the most Arson are started with the petroleum based accelerant. So we all know that petroleum हो गया, kerosene हो गया, so ये काफ़ी जल्दी फायर को होल्ड कर लेते हैं, काफ़ी जल्दी फायर को पकड़ लेते हैं. सो व्हेनेवर जब भी कोई बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी को फायर करना होता है, इट सेट टू फायर, तो पेट्रोलियम, कैरोसिन इट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल कि कितनी जल्दी आग फैल जाती है, यू कैन से. सो पेट्रोलियम, the search of the fire scene must be focused on finding the fire origin, which may be most productive in any search for accelerant or ignition devices. So the किसी भी फायर को इसीलिए मोस्टली एज यू कैन सी न्यूज़ में भी है ये, एंड यू हैव वेंट थ्रू दैट. कोई भी पेट्रोल पंप, they are not giving the petrols in the bottle. Why? Because the petrol have a huge मतलब petrol can be used in a very different ways in setting fires. Okay, so that is the reason most of the petrol pumps, they are avoiding of giving petrols in that bottle, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए हैं. फॉर एग्जांपल, अब फायर, पेट्रोल से फायर लग सकता है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग में. इनफैक्ट किसी भी पर्सन को दे कैन सेट ऑन फायर थ्रू दैट पेट्रोल, बिकॉज वेरी लिटिल पेट्रोल इज नीडेड एंड अ ह्यूज there is a huge impact. So it is a rule that is made by the government. So do not give petrols in the bottles.
Okay, because whenever you see that in different incident, buildings are set to fires, vehicles are being setting to fires, even the lands, forest, all the motor vehicles, everything is setting fires, and just because with a little of the petrol. So petrol based accelerant has a huge impact on the fires. So now this let us understand this. Some tellurate sign of arson include evidence of separate and unconnected fires, some of the streamers to spread the fire from one area to another, evidences to this of severe burning found on the floor as opposed to the ceiling of the structure due to the inflammable liquid. So with अगर हम कुछ साइन देखें, सो अगर हम एविडेंसेस के थ्रू देखते हैं तो फायर अगर एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर रूम में फायर लगता है, जस्ट इन फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट wanted to explain this, तो वो फायर बढ़ता जाता है because fire has this capacity to spread from one place to another. So in that particular cases to collect the evidence is a very challenging. Okay, so normally a fire has a tendency to move in an upward direction. अब यहाँ पर upward direction मैंने एक चीज़ यहाँ पर term use किया है, the upward this upward direction. So what do you mean by upward direction? फायर की ऐसी क्यों टेंडेंसी होती है कि वो upward direction में जाए? For this answer, for the question for this answer is because जो फायर होता है वो क्यों ऊपर जाता है? ड्यू टू द फ्लेमेबल लिक्विड. ओके, ड्यू टू द फ्लेमेबल लिक्विड. सो फायर जो है ऊपर के तरफ जाता है, मीन्स ऑपोजिट टू द फ्लोर, मतलब टू द सीलिंग. Okay, so why normally fire has a tendency to move in an upward direction? Why? Because due to the flammable liquid. Okay, so the probably origin will most likely be the lowest point, showing the most intense characteristics of the burning, and fortunately combustible liquids are rare entirely consumed during the fire. So this is the whole chemistry, or you can say characteristics of fire, that is there in committing any incidents. So in the next lecture we will going to understand how the forensic team collect the evidences from the fire places. कैसे एक एविडेंस टीम, फॉरेंसिक टीम्स एविडेंस को कलेक्ट करती है, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, इन कलेक्टिंग द फायर in collecting the evidences it is a quite challenging. Okay, so that brings to the end of the lecture. Here I have used 2 or 3 terms, so I just want everyone to go through all these terms for the better understanding, so that you can have a huge knowledge on this arson thing. So I'm just noting down some points or keywords. So I'm just noting down some important questions, I can say, not the terms. So the first question that can be asked in the interview could be, what is considered arson? What is considered arson? So the answer for this is keep burning of property such as motor vehicles, watercraft, forest, home, business, land, etc. So ये सारे they are considered an act of arson. Second है, is arson a violent crime? क्या arson एक violent crime है? Okay, तो yes, of course arson is the first degree crime.
first degree crime, and it is related to building crime, buildings, house, forest. What is the meaning of arson? सेकेंड है मीनिंग ऑफ एरसन. मीनिंग ऑफ एरसन. ओके, सो मीनिंग क्या है एरसन की? अगर हम फुल मीनिंग की बात करें, द फुल मीनिंग ऑफ एरसन इज द मैलिशियस डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर. प्रॉपर्टी कैन बी बिल्डिंग्स, कार, वाटरक्राफ्ट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. 3 एलिमेंट्स क्या हैं फॉरेस्ट के? 3 एलिमेंट्स हैं. Malicious intent to destroy something by fire. Second है burning of a structure where at least at a very least cheering can be seen. And the last one is burning of property जो कि occupied हो या unoccupied हो, means forest or any house. Is a arson, is setting a fire considered arson? Yes, of course. So these are certain important questions that can be asked in the interview, so you can go through these questions for better understanding. So that brings to the end of the lecture. I hope you have understood the lecture. Follow ITLS Academy on different portals. Subscribe ITLS Academy on YouTube. This is our website, that is www.itlsacademy.com. You can go through to this website for better understanding of any subjects you want to join. This is our helpline number as well as our WhatsApp number, so you can simply call on this number and get updated. Thank you for watching, students. Please do like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you once again.